दोस्तों, आज हम चेक करेंगे HP T830 जंबो प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रहा है स्कैनिंग का। जब भी हम इसमें स्कैनिंग के लिए पेपर लगाते हैं, ये लॉक नहीं करता है पेपर। जैसे हम कॉपी करेंगे, ये देखिए पेपर ले ही नहीं रहा है। इसमें फॉल्ट आया है। इसमें जब ये रोलर घुमाते हैं हम इस वाले रोलर को, तो ये रोलर के साथ ये भी रोलर घूमता है। ये देखिए, तो ये दोनों रोलर यहाँ बेल्ट से जॉइंट है। हम चेक करेंगे इधर साइड से खोल के कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हम पहले मशीन बंद कर देंगे। रोको, इसमें यहाँ अंदर एक स्क्रू है। यहाँ पर अंदर इस मोटर से ये बेल्ट के थ्रू घूमता है, तो यहाँ से दिख नहीं रहा है कुछ। हम यहाँ पे इस पैनल को खोलेंगे। बेल्ट तो ओके है, लेकिन ये जो गियर अटैच करता है इसको दबाता है। ये ऐसा दबा के गियर को इससे जॉइंट करता। हाँ, ये गियर इधर सरक गया है। इधर सरक गया। हाँ, ये खांचे में से इसके निकल गया है। हाँ, ये गियर हमारा यहाँ से उसकी जगह से निकल गया है। हम इतने यूनिट को बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम ये मोटर का कनेक्शन खोल लेंगे। इसके बाद यहाँ इसका एक स्क्रू है,
स्प्रिंग उसके साथ ही है और एक स्क्रू अब हम ये गियर अब देखेंगे इसे घुमा के हम इसको दबा के रखो। हम्म ठीक। अब हम मोटर का कनेक्टर लगा देंगे। ओके। अब हम मशीन को पहले चेक कर लेंगे पूरे नट लगाने से पहले। मशीन कैलिब्रेशन हो रहा है हमारा, इसके बाद हम स्कैनिंग करके चेक करेंगे। अब हम पेपर लगा के चेक करेंगे इसमें। ले लिया है इनने, ले लिया है। अब इसमें हम स्कैन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा स्कैनिंग चालू हो गया है। गियर गिरने की वजह से इसमें स्कैनिंग बंद हो गई थी।
हमारा स्कैनर काम करना बंद कर दिया था। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल बाबा फिक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।